He measures and his skill measures that no one can judge him. No can be judged only by size, health, height, weight, or age. Even an smallest, small, smallest creature may be most important and most useful for the humanity, for the society, for the community. He explains these thoughts in a very, very humble manner and very gentle manner and very clear manner. The noble nature, the name of the man, the name of the man is better than man himself. He explains through this poem first of all first line here, the message the poet wants to give us that the central idea and thought of the poem, man came, man meaning, and man central idea of the poem. We can explain only in two or three sentences what the poet wants to say and express his thoughts among you. Dear students,
higher. Now we live in deeds. A man is known by the work he does. A man is known by the work he does. If anyone asks me the definition of beautiful or beauty, I say a person who is beautiful. If you ask me who is beautiful in the world, I say beautiful is that. Beautiful is that who is beautiful. अर्थात काम और कर्म से इंसान की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा होती है, वस्तु की पूजा होती है, जानवर की पूजा होती है, चिड़िया की पूजा होती है, इवन एन आंट छोटी सी चींटी है उसकी भी पूजा होती है। अपने क्या जानना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो खजूर का पेड़ बहुत लंबा longest है, हाईएस्ट है, विशालकाय है, ऊंचा ऊंचा, इसका एक विषय है। लेकिन क्या एक नारियल के पौधे से, क्या एक आम के पौधे से, क्या एक अनार और सेब और नाना प्रकार के अन्य फ्रूटफुल पेड़ पौधों से क्या वो उपयोगी है? केवल मात्र अपनी हाइट से, अपने ऊंचाई से, अपनी लंबाई से क्या वो महान बनना चाहता है तो महान बन सकता है। इसलिए हमेशा इस कवि का भाव है कि कोई चीज छोटी आकार में हो सकती है, वजन और भार और उसमें हो सकती है, लेकिन छोटी चीज में भी क्वालिटी हो सकती है। यहाँ क्वांटिटी की तुलना में क्वालिटी को पसंद करता है। केवल मात्र बूढ़ा हो गया, बूढ़ा तो वेट नहीं होता, कौन नहीं होता, पर हम और आप कौन से बूढ़े नहीं होंगे?
और बूढ़ा होने पर क्या होता है, ज्यादा आती है हमारे विजडम ज्यादा होती है, हमारा विवेक बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी ब्रिलियंस बढ़ती है, या हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। नो, एज का इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है। एज का उस वस्तु या व्यक्ति की इम्पोर्टेंस से कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना। उसकी साइज से कोई लेना देना नहीं, और उसकी ऊंचाई से, उसके हेल्दी होने से, उसके मोटिव से, उसके भारी भरकम होने से, उसका ह्यूज विशालकाय होने से, पर्वताकार होने से उसका कोई महत्व, उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए। यहाँ वो क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस करना चाह रहा है। छोटी उम्र और बड़ी उम्र में डिफरेंस करना चाह रहा है। वो छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, माइक्रो से मैक्रो की ओर जाना चाहता है। वो बताता है कि माइक्रो का भी उतना ही महत्व है, उतना मैक्रो का है। कहने का मतलब ये है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी मात्र का जो मूल्यांकन किया जाए, वो उसके गुणों से होना चाहिए। We should see the advantages, the merits, the importance of that particular thing or matter. Here he illustrates and gives example of two. कौन से? एक तो कर रहा है तुलना किससे? एक को बरगद का पेड़, बहुत बड़ा, विशालकाय, गहरी गहरी उसकी जड़ें, और आच्छादित शगन, उसकी इमेंसिटी और उसका श्वान और उसका एरिया बड़ा विशाल है, मोटा मोटा, बड़ा बिग, हाई, लॉन्ग, एंड इसमें चाहे लंबाई हो, लेंथ हो,
The O is less important than the although the is very small, very little, and short living life, one day life. Lily lives only one day life. You can see only one day life. ये तो अरे भैया दोनों आपके सामने है, विशाल आकार है, छोटा आकार है, लंबाई में ये बड़ा ये छोटा है, ऊंचाई में ये बड़ा और ये लाइफ के अंदर चाहे आप किसी भी रूप में तुलना करो, इसकी हाइट ले लीजिए, इसकी साइज ले लीजिए और इसका वेट ले लीजिए, और इसकी लाइफ ले लीजिए और इम्पोर्टेंस इस दृष्टि से भी ये बड़ा, इस दृष्टि से भी ये बड़ा, इस दृष्टि से भी ये बड़ा और लॉन्ग लाइफ की दृष्टि से भी ये बड़ा, लेकिन यदि ये की जाए इसकी आँख की जाए तो इम्पोर्टेंस की दृष्टि से, कवि के दृष्टिकोण से कौन बड़ा है? लीली बड़ा है। Lily is far better than that of all. We can see